Hello everyone, good morning. My name is Lalit and today I'll be discussing an argument that was asked in 2022 and I'll be writing it live for you guys in real time to see and understand how you could have written it better or how you can write it better in the upcoming exam on 6th of August. So please pay attention. देखिए हमारे पास जो टॉपिक है दैट इज़ वीडियो गेम शार्पन द माइंड. सो फर्स्टली वी हैव टू राइट 4 that is they do sharpen the mind, and then we also have to write against that they don't sharpen the mind. So I'll be using two different pens for the same so that it is easy to differentiate between the two. Please pay attention here that this is one of the formats of writing arguments which many people don't follow, but I have been following it for the last 4 attempts that I've been writing, and this has very much worked for me. So let's start with the argument. So argument ये कहता है कि video game sharpen the mind. So firstly we have to present that they sharpen the mind. तो आपको क्या लगता है कि इसमें पहला argument क्या हो सकता है? So that is they help in faster decision making. Faster decision making क्यों होती है? Because if you are playing any shooting game or driving game तो आपको quick real time में decision make करने पड़ते हैं to stay alive in the game. Understood? Then for the same they help us to think objectively. That is, we can make clearer decisions quickly as well as in on the basis of merit of that game. To think objectively, and we can extrapolate the same to reality. 2 पॉइंट्स हो गए जो हमें इसमें मदद करते हैं to sharpen the mind. Third one is what can be it? Making video games also. जो डिज़ाइन करते हैं लोग, मेकिंग वीडियो गेम्स और डिज़ाइनिंग वीडियो गेम्स also requires deep analytical skills. Alright. So ये 3 चीज़ें तो ऐसी है जो आपको माइंड में आपके माइंड को शार्प करने में हेल्प करती है. नाउ इफ़ यू रन आउट ऑफ आइडियाज़ हेयर इन 3 के बाद तो आपको थोड़ा सा इन्हीं से एक्सट्रैक्ट करके और पॉइंट्स बनाने होंगे. अब आप सोचिए कि वीडियो गेम्स शार्पन द माइंड, तो इसमें हमने ये सब चीज़ें तो लिख ली हैं कि इन सब से इस तरीके से हम मतलब कि दे हेल्प अस इन शार्पनिंग आवर माइंड, बट व्हाट एल्स कैन बी थॉट ऑफ. अब आपको यहाँ पे ये सब चीज़ें रियल टाइम में इसी तरीके से लिखनी होंगी. आई पिक दिस टॉपिक रैंडमली ताकि मैं आपको बता सकूँ कि मैं कैसे वहाँ पे सोचता. तो देखिए, इफ़ आई एम नॉट कमिंग एट एन आइडिया और अ पॉइंट राइट नाउ इन दिस, सो व्हाट आई विल बी डूइंग हियर इज आई विल बी स्विचिंग टू द नेक्स्ट, दैट इज अगेंस्ट. तो अगेंस्ट में पहला क्या है? दे आर very different from reality. कि ऐसा लाइफ में कभी होता नहीं है कि वन पर्सन इज टेकिंग ओवर एन एंटायर आर्मी जैसा कि वीडियो गेम्स में दिखाया जाता है. दे प्रमोट वायलेंस एंड इनएक्टिविटी. इनएक्टिविटी कैसे कि अगर इफ आई एम हैविंग अ संडे एंड आई विल बी sitting in my bed on a laptop, I'll be playing a game, so that makes me inactive, not doing any physical work. Then one more thing, they promote wastage of time or wasting of time in budding minds. जो रीडिंग में, स्टडिंग में, प्लेइंग में यूज हो सकता था उसको वो वायलेंस रिलेटेड एक्टिविटीज़ में या फिर इस तरीके से हेल्प करते हैं. दे ऑल्सो कॉज एक्सीडेंट्स as players tend to drive in reality as they see in games, as they do in games. तो अब यहाँ पे सपोज करिए कि आई हैव रन आउट ऑफ आइडियाज हेयर ऑल्सो. तो
I usually write 5 points each in all of these. All right, all of the arguments I'll be writing 5 points. Now whatever time that we have spent, I'll be thinking of more points है. ठीक है, तो अब आप ये सोचिए कि वीडियो गेम्स के प्रो में आप क्या बातें लिख सकते हैं. what is it that you can write and that is mentally simulating for people to play them. So what comes to your mind? What is coming to my mind is that if someone is playing video games in a controlled manner, what he can do is he can measure his daily productivity in the sense that video games can be an indicator of recreation or imagination. So they help us in refreshing our mind and provide a good recreational activity. recreation लिख के भी आप छोड़ सकते हो उसमें. ठीक है, so more or less these are the 4 basic points that are supporting it, and these are the 4 basic points which are opposing it. Now you will have to extrapolate these or extract something else from these which fills some pages for you. क्योंकि what happens is कि आपको randomly एक topic मिलेगा जिस पे ज़रूरी नहीं कि आप 5 से 6 points निकाल पाएँ. And that is why I've chosen a rather difficult or unconventional topic than say political or polity based topics or economy based topics. तो इसलिए हमने इसको लिया है. अब इसमें आप oppose करने के लिए वीडियो गेम्स में एक चीज़ और क्या लिख सकते हैं बताइए. देखिए, they constrict our minds to digitization or digital world and prevent us from what? If the digital world that we are opening to, we are being prevented from going to the actual reality, and prevent us from doing actual recreation. That is, it is a direct point in opposition to this point. all right, तो थोड़ी सी coherence इस चीज़ में भी होनी चाहिए कि आप उसको directly oppose करें. ठीक है, so more or less 5 points I've written here, and if I were to write one more here, then I'll have to think more. ऐसा real time में भी आपके साथ होगा. That is why I'm telling you कि आप you will run out of points here, and that is why I'm asking you to add what you can do, और थोड़ा सा उसमें repetition भी ना हो. तो अब इसमें आप वीडियो गेम्स के अगेंस्ट एक ऐसा पॉइंट बताइए जो क्या हो सकता है. दे आर मोस्टली पेड and encourage teenagers to look for ways to pay for them. ये आपने बहुत जगह देखा होगा कि most of these games are paid and they make card payments or some other ways of payments from their parents account to just keep playing it. और इसमें सबसे मेन पॉइंट जो हो सकता है वो होता है कि लत लग जाती है इनकी. तो ये आप लास्ट में ऐड कर सकते हो. They are difficult to quit. Once started. ठीक है, तो पॉइंट्स आपने यहाँ पे ऐड कर दिए हैं. अब यूजुअली पीपल ऑल्सो राइट अ conclusion on it. I have not written it even once, but if you want to write, you can write a balanced conclusion that video games are a reflection of digital creativity. They can promote mental development if played judiciously.
अब I'm not very sure how much time I've taken it while explaining it to you also, but I don't think it is a lot of time. So this is how you can write. This is one of the formats. The other formats are कि आप पैराग्राफ में लिखें. आई हैव नॉट रिटन इट इन अ पैराग्राफ, सो मैं आपको वो भी दिखा दूंगा. बट दिस इज हाउ यू कुड हैव रिटन. दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन 2022. आई एम येट टू सी माय 2022 मार्क्स, बट आई थिंक दिस इज अ वेरी वेरी गुड काइंड ऑफ प्रेजेंटेशन फॉर एनी आर्ग्यूमेंट. ठीक है, इसमें आप कोहेरेंट पॉइंट्स प्रेजेंट कर रहे हैं एंड दिस इज हाउ यू कैन राइट. So please practice PYQs and do let me know if you have any doubts in the comment section. All the best. Do well. Keep writing.